सुन मेरी रानी रानी शाहजहां मैं तेरा दिल ममता। वेलकम बैक टू आरकेबी ब्लॉग्स। आज ब्लॉग्स रे हमें देखिदबा हमें इंट्रोडक्शन ठीक अच्छे चैप्टर 1 आज चेष्टा करिबा खत्म करिया पई। चैप्टर 1 खत्म करिया। चैप्टर 1 खत्म करी हबनी ठीक अच्छे। चैप्टर 1 रे बहुत पेजेस आसुची। एक पेज आउची, 2 पेज आसुची, 3 पेज आउची, 4 पेज आउची, 5 पेज कोशिश करिवी 5 पेज आसुची, 5 पेज खत्म करिया भाई। ओके ठीक है। Introduction, root of drug administration. Okay, pharmacology. So pharmacology branch of science that deals that concerned with the study of drugs and its action in the body. Pharmacology is a branch of science that is concerned with the study of drugs and its action in the body. Drugs, it is a substance that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. Okay, historical aspect of pharmacology, contribution and what are the scientists. So father of pharmacology Oswald Schimmelberg, father of Indian pharmacology Ramnath Chopra, father of Indian pharmacy education Mahadeva Lal Shroff, father of chemotherapy Paul Ehrlich, father of chemotherapy Paul Ehrlich, father of medicine Hippocrates, father of fast pharmacology institute Rudolf Buchim, founder of fast pharmacology institute, founder of fast pharmacology institute Rudolf Buchim. Discovery of penicillin Alexander Fleming, discovery of streptomycin Selman Waxman, discovery of insulin Banting and Best, discovery of antimicrobial effect of protosil, discovery of antimicrobial effect of Prontocil Gerhard Domag, Gerhard Domag. Discovery of homeopathy Samuel Hahnemann. Discovery of blood type Karl Landsteiner. Discovery of vaccination Edward Jenner, discovery of vaccination Edward Jenner, discovery of neurotransmitter Otto Loewy. So father of pharmacology Oswald Schimmelberg, father of Indian pharmacology Ramnath Chopra, father of Indian pharmacy education Mahadev Lal Shroff, father of Indian pharmacy education ज्ञान मतलब शिव, ज्ञान मतलब शिव, सबसे बड़ा ज्ञानी शिव है तो महादेवा लाल श्रॉफ, फादर ऑफ केमोथेरेपी पॉल एरलिच, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ फास्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट फाउंडर ऑफ फास्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट रोडोल्फ वोचिम, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन वाक्समैन, discovery of insulin Banting and Best, discovery of antimicrobial effect of Prontocil Gerhard Domag, discovery of homeopathy Samuel Hahnemann, discovery of homeopathy Samuel Hahnemann, discovery of blood type Karl Landsteiner, discovery of a vaccine Edward Jenner, vaccination, discovery of a neurotransmitter Otto Loewy. Branches of pharmacology. So pharmacokinetic, Greek word kinesis मतलब movement, what the body does to the drug, what the body does to the drug, drug के साथ body क्या करता है.
This refers to the movement and alteration of the drug by the body, which include absorption, distribution, metabolism, excretion. Pharmacodynamic, Greek word dynamis मतलब power, what the drug does to the body. This refers to the physiological biochemical effects of the drug, its mechanism of action at organ system, subcellular system, macromolecular level, and their adverse effect. Pharmacotherapeutics, application of a pharmacological information together with knowledge of a disease टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ डिजीज मतलब डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन, क्यूर कैसे कैसे करते हैं. फार्माको इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड थेराप्यूटिकली. नाउ फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स मतलब फार्माकोजेनोमिक्स. फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स या फिर फार्माको जेनोमिक्स এটা गेट 2004 रे आस्थिला. साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ अ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशन. साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ अ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशन इन ड्रग रेस्पॉन्स. फार्माको एपिडेमियोलॉजी, study of both useful and adverse effect of a drug on large number of a population. Pharmacoepidemiology, study of both useful and adverse effect of a drug on large number of people. Pharmacovigilance, it is related to detection, assessment, understanding and prevention of a adverse effect of the drug. Clinical pharmacology, study of a drug both old and new in human, ठीक है जी, in human, that include clinical pharmacology, study of a drug both old and new, okay, in human, that include pharmacodynamic and pharmacokinetic study in healthy and disease individual. Chemotherapy, treatment of a systemic infection, malignancy, with a specific drug that has a selective toxicity for infecting malignant cell with a minimal effect on host cell. Toxicology, study of a poisonous or a toxic effect of the drug. Toxicology, study of a poisonous or a toxic effect of the drug and other chemicals मतलब household, environmental pollutant, industrial, agricultural, homicidal, that focuses on detection, prevention and treatment of a poisoning. So toxicology माने study of a poisonous or a toxic effect of the drug and other chemicals मतलब हाउसहोल्ड, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, होमिसाइडल, that focuses on detection, prevention and treatment of a poisoning. Chronopharmacology, chronopharmacology, science that studies the correct correlation, science that studies चिड़ा लगुच शला दी जन को देखिले chronopharmacology, science that studies the correlation of a drug action, with circadian rhythm to obtain optimum therapeutic effect and minimize adverse effect. Chronobiotics are a drug used to modify or reset circadian
rhythm. Chronopharmacology, science that studies the correlation of a drug action with circadian rhythm to obtain optimum therapeutic effect and minimize adverse effect. Chronobiotics are drugs used to modify or reset circadian rhythm. Orphan drug. So these are the drugs used for the prevention and treatment of a rare disease. जीपैट 2023 शिफ्ट 1 आसला. सो ट्रिक्स है सार डीडीएलजी का फैन है. सार मतलब सोमाटोट्रोपिन, सोडियम नाइट्राइट, उसके बाद रिफाब्यूटिन, सोमाटोट्रोपिन, सोडियम नाइट्राइट, रिफाब्यूटिन. डीडीएलजी मतलब डिगॉक्सिन एंटीबॉडी, तापरे लियोथायरोनाइन T3, लियोथायरोनिन. फैन मतलब फोमेपिजल, एम्फोटेरिसिन बी नाइट्रेट्स. डीडीएलजी डिगॉक्सिन एंटीबॉडी. और डीएल ड्राइविंग, सार का ड्राइविंग लाइसेंस. डीडीएलजी डिगॉक्सिन एंटीबॉडी. ମତେ ଶଳା ପଛରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଶଳା ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ. ଶଳା ଖାଉଛନ୍ତି. डिगॉक्सिन एंटीबॉडी, लियोथायरोनिन T3. Okay. Essential drug. According to the WHO, essential drug are those that satisfy priority healthcare and need of a majority of a population. Example: amoxicillin, ciprofloxacin, metronidazole. So essential drug को कैसे याद रखोगे? Effective and economical, safe, single drug formulation, mostly environmental factor one also consider in making the choice, needed by the majority of a population. They must be available at all time in proper dosage form. Aim is to optimally use the limited financial resources. List of essential drug is made locally with the help of a WHO model list. WHO model list 1977 में फर्स्ट आसला. 2023 रे 23 लिस्ट बाहरला जो कि लेटेस्ट है, जिसमें 591 ड्रग्स होता है. इंडिया एसेंशियल ड्रग लिस्ट 1996 में आया था, जो कि फर्स्ट आया था. 2022 रे तमर फिफ्थ लिस्ट आसी, जोटा कि लेटेस्ट रही 384 टा ड्रग. ओके, 2022 सुधा. Now prescription and non-prescription drug. So prescription drug, pharmaceutical drug that requires a legal medical prescription from a registered medical practitioner or physician for its sale, marketing and dispensing. उसको बोला जाता है prescription drug.
antidepressant drug, opioid drugs, narcotic drug. These are prescription drug. Non-prescription drug क्या है? Pharmaceutical drug that can be purchased without any kind of a medical prescription from a physician. It is also called as over-the-counter drug, nimesulide, aspirin, oral rehydration salt. So these all are non-prescription drug. Now source of a drug information. Pharmacopoeia, IP, VP, USP. So it is a book that is produced by the medical or pharmaceutical society and the government or both that provide instruction for identifying the drug. Monograph, WebMD network, RX list, etc. Monograph, WebMD network, RX list, etc. So monograph are factual scientific document on a drug product that without promotional material describe the drug properties, claims, indication and condition of use. National formularies deals with the pharmaceutical ingredient and is the usual drug reference in hospital and for physician, druggist and chemistry. Martindale, it is also called as extra pharmacopoeia. It contains complete drug reference book published by Pharmaceutical Press listing 6,000 drugs. Physician Dex reference. It is a compilation of a visual material and a plain English explanation for the safe and effective use of a prescription and a non-prescription medication. American Medical Association AMA drug evaluation. It provide physician and other healthcare professional with up-to-date information on the clinical use of the drug. Textbook. It contains collective data about the drug, its mechanism, dosage form and adverse drug reaction which are updated regularly. Journal of Pharmacology. It includes original article reporting original research, idea or opinions, provide most up-to-date information on a particular drug. Now drugs and therapeutic bulletin. It provides information about cost of alternative medicinal and provides update on side effect including advantages and disadvantages. Drugs and therapeutic bulletin. Drugs and therapeutic bulletin. It provides information about the cost of alternative medicinal and provide update on side effect including advantages, disadvantages. Medical database. Micromedex, Medline, Cochrane Library, etc. Now drug का nomenclature. अप्रूव्ड नेम या फिर इसे बोला जाता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम या फिर इसे बोला जाता है ऑफिशियल नेम या फिर उसे बोला जाता है जेनेरिक नेम. अप्रूव्ड नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ऑफिशियल, generic name. So the name accepted by a competent scientific body or authority like USN Council. Example of phenytoin, aspirin. Brand या फिर proprietary name. GPAT 2019 रे एटा आस्थिला क्वेश्चन. It is the name assigned by manufacturer and in is his property or trademark. Dilantin, Disprin. Chemical name. It describes the substance chemically with its chemical name according to its chemical structure. Diphenyl hydantoin, acetyl salicylic acid. These are comes under chemical name. Code name. Newly synthesized discovered drug is given code name during its development. It consists of letters and number जैसे कि RO
1788 later named flumazenil. Source of a drug. Drugs are obtained from a variety of sources that are classified below. Source of drug: natural, synthetic, biotechnology. Natural में plant, animal, mineral, microbes, human. So plant में atropine, morphine, AIM. एनिमल में इंसुलिन, हेपारिन. मिनरल में मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. माइक्रोब्स रे पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन. ह्यूमन में इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड. ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी. नाउ सिंथेटिक रे तमर आसीबो केमिकल सिंथेसिस जैसे कि एस्पिरिन, ओमेप्राजोल. बायोटेक्नोलॉजी रे तमर आसीबो सेल कल्चर, हाइब्रिडोमा टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सेल कल्चर रे तमर आसीबो यूरोकाइनेज, कल्चर्ड सेल ह्यूमन किडनी. हाइब्रिडोमा टेक्निक रे तमर आसीबो रिटुक्सिमाब. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे तमर आसीबो ह्यूमन इंसुलिन, हेपाटाइटिस बी वैक्सीन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Route of a drug administration. So drugs are administered by a variety of route. Most common consideration feasibility and convenience defines selection of the route. Route of a drug administration can be broadly divided into local route and systemic route. Local route simplest mode of a drug administration. Site specific administration of the drug where the desired action is required. Systemic side effects are minimal. Local route, systemic route. Now route of a drug administration. Local रे आसीबो टॉपिकल रूट. डीपर टिश्यू रे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्राथिकल इंजेक्शन, रेट्रो बल्बार इंजेक्शन. उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई, इंट्रा आर्टेरियल. सिस्टमिक में एंट्रल, पेरेंट्रल. एंट्रल रे ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटानियस. पैरेंट्रल रे इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटानियस. सबक्यूटानियस रे डर्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स. ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, इंट्रानेजल. So various local route of drug administration are topical. Topical drug applied to the skin and mucous membrane at a various site for local action. Okay, applied to the skin, nasal, eye, ear, anal, vaginal canal. That is key অদ্ভুত লক্ষণ. एग्जाम्पल है आयोडीन, लिडोकाइन, साल्ब्यूटामॉल, क्रोमोलिन, सोडियम. डीपर टिश्यू रे तमरा आसीबो certain deep areas can be approached by using a syringe and needle, but the drug should be in such a form that systemic absorption is slow. Intra-articular injection placed into the joints, हाइड्रोकोर्टिजन नी जॉइंट रे जो दिया जाए. इंट्राथिकल इंजेक्शन, इंट्राआर्टिकुलर मतलब जॉइंट. आउ गोटे आसीबो इंट्रा आर्टिकुलर. आउ गोटे आसीबो इंट्रा आर्टेरियल. इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टेरियल. ये आर्टरी में जीवो, आर्टिकुलर है गला जॉइंट. So intrathecal injection, drug injected into the spinal or subarachnoid space, useful in spinal anesthesia and chemotherapy. Example है गला lidocaine. Retrovalvar injection, drug given behind eyeball, hydrocortisone acetate. ठीक है तारा example. Arterial supply रे intraarterial route, drug injected into the artery. Example treatment of malignancy involving limb. Systemic route रे तमरा आसुची
Drug are absorbed into the blood, distributed all of the body. Enteral route, it include oral, sublingual, rectal route. Enteral route रे तमर आसुची oral आसुची, sublingual आसुची, rectal route भी तमर enteral route under रे आसुची. Oral, most common and acceptable route for drug administration, not suitable for irritable drug like आपका एमिटिन. ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जुइस, इसके लिए ये सुइटेबल भी नहीं है. जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये डाइजेस्टिव जुइस आपको डिस्ट्रॉय कर दिए. ड्रग्स विथ हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म लाइक लिडोकेइन, नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये भी माने ओरल रूट रे देई हबनी. लिडोकेइन, नाइट्रोग्लिसरीन आर हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म अछि. किछि ड्रग अछि जहाको माने ओराली नेले ये डाइजेस्टिव जूस ताको डिस्ट्रॉय कर दिए, जेमते कि पेनिसिलिन हे गला, इंसुलिन हो गला. इरिटेबल ड्रग जते सब अछि जेमते कि एमिटिन, एमिटिन गोटे इरिटेबल ड्रग, सेटा इरिटेशन कॉज करिवो, त हमको कंफर्ट लागिवनी. नाउ ओरल हे गला, ओरल पर आसीबो सबलिंगुअल रूट. ड्रग अब्जॉर्ब भाया बकाल म्यूकोजा, दैट इज under tongue or below cheeks and gums by fast pass metabolism. एग्जाम्पल है बाईपास फास्ट पास मेटाबॉलिज्म. ये फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को कौन कर दिए, पूरा बाईपास कर दिए. एग्जाम्पल है गला नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन. absorption of a drug is affected by the partial coefficient of the drug. GPAT 2017 में आया. absorption of a drug is affected by, इस रूट में अगर हम ड्रग को लेंगे, absorption of a drug is affected by partial coefficient of a drug. Now rectal route, drug can be given in the form of a solid or liquid. rectal route रे कौन, drug can be given in the form of a solid or liquid via rectal canal. suppository, it can be used for local मतलब topical effect as well as systemic effect. example, indomethacin for rheumatoid arthritis. enema, drug is absorbed via rectal mucosal membrane. enema, the drug is absorbed, enema दिया हुआ. The drug is absorbed via rectal mucosal membrane, produces systemic effect. Example, diazepam for status epilepticus in children. cutaneous, highly lipid soluble drug जो होगा cutaneous. highly lipid soluble drug cutaneous can be applied over the skin for can be applied over the skin for slow. highly lipid soluble drug जितने सब cutaneous can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. slow भी होगा, slow absorption होगा and prolonged, slowly absorb होगा. तो ये अधिक समय पर्यंत prolonged absorption देखेगा. the liver is also bypassed, तो यहाँ पर भी आपका बाईपास हो रहा है. ठीक है. now parenteral route, drugs directly delivered into the tissue fluid or blood. Action is more rapid and predictable than oral administration. Aseptic condition must be maintained. Now angle for inserting injection, intramuscular 90, subcutaneous आपका 45, intravenous 25, intradermal 10 ରୁ 15, मसल, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद आपका एपिडर्मिस. ठीक है. सो इंट्रामस्कुलर 90, सबक्यूटेनियस आपका 45, इंट्रावेनस
25 इंट्राडर्मल आपका 10 to 15 degree. Now various type of parenteral route are intramuscular route. Drug are injected into the large skeletal muscle such as deltoid muscle, gluteus maximum and vastus lateralis. A large volume of 5 to 10 ml can be given at a time. Paracetamol होइगला, डाइक्लोफेनाक होइगला, intramuscular. Intravenous route, drug injected directly into the bloodstream via vein. Drug are injected as a bolus or infused slowly. Drug are injected as a bolus or infused slowly. Viability is 100%. Local irritation may cause phlebitis. Local irritation may cause phlebitis. GPAT 2011 question. Intradermal route, drug injected intradermal माने 10 ରୁ 15 डिग्री, इंट्रावेनस माने 25, सबक्यूटानियस 45, इंट्रामस्कुलर 90. तो इंट्राडर्मल माने 10 ରୁ 15. So intradermal route, drug injected into the layer of the skin raising a valve. Example है bacillus calmette guerin. BCG vaccination. Drug sensitivity test DST, drug sensitivity test. Now it hammer सरीगला subcutaneous route, the drug injected into the subcutaneous tissue of thigh, abdomen and arm. Self medication is possible. Example है insulin. Suitable for depot repository preparation. Suitable for depot repository preparation. Nerve plant for contraception. Nerve plant. Some special form of subcutaneous route are dermojet, a high velocity jet of a drug solution is projected from microfine orifice using gun-like instrument. Pellet implantation. Provide sustained release. Example है deoxycorticosterone acetate, डोका या फिर टेस्टोस्टेरोन. सो पेलेट इम्प्लीमेंटेशन माने प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज. पेलेट इम्प्लीमेंटेशन में सस्टेन्ड रिलीज हबो. आउ एग्जांपल है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट. डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट आउ गोटे है टेस्टोस्टेरोन. ठीक अछि. पेलेट इम्प्लांटेशन ये हाँ ये सबक्यूटानियस रूट रे सम स्पेशल फॉर्म. ये सब सबक्यूटानियस रे दिया जाए. सबक्यूटानियस रूट रे एंगल केते 45 डिग्री, इंट्रामस्कुलर 90, सबक्यूटानियस 45, इंट्रावेनस 25, इंट्राडर्मल 10 to 15. ठीक अछि. तो डर्मोजेट ए हाई वेलोसिटी jet of a drug is projected from a high velocity jet of a drug solution is projected from the microfine orifice using gun-like instrument. Pellet implantation provide sustained release. ये sustained release provide करियो. Example deoxycorticosterone acetate. deoxy मतलब डो का, corticosterone acetate. C माने corticosterone, A मतलब acetate. D का मतलब होता है D, O का मतलब होता है ऑक्सी, C का मतलब होता है corticosterone, A का मतलब होता है acetate, डोका. सियालिस्टिक मतलब इम्प्लांट. सियालिस्टिक ड्रग इज प्लेस्ड इन ट्यूब या फिर कैप्सूल. ड्रग इज प्लेस्ड इन ट्यूब और कैप्सूल. एग्जाम्पल है हार्मोनल या ड्रग इज पैक्ड इन ट्यूब और कैप्सूल. ट्यूब एंड कैप्सूल में ड्रग को पैक किया जाएगा.
हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जितने होते हैं वो सियालिस्टिक होते हैं. इम्प्लांट. नाउ ट्रांसडर्मल ड्रग इज गिवन as dermal patch or ointment that delivers drug into the circulation for systemic effect. Drug is given as a dermal patch और ointment के फॉर्म में दिया जाएगा या फिर dermal patch के तौर पर दिया जाएगा that delivers drug into the circulation for systemic effect. Scopolamine patch for motion sickness. ठीक है जी. Nitroglycerin patch or ointment for angina. Estrogen patch for hormone replacement therapy HRT. Estrogen patch दिया जाए for hormone replacement therapy. Inhalational volatile liquid and gas जो होते हैं are given by inhalational. Volatile liquid या फिर gases are given by inhalational for systemic effect. Example है गला general anesthetic. Absorption takes place from alveoli. Absorption takes place from alveoli. Quick onset of action. Intranasal mucous membrane of a nose absorb drug bypass gastric juice and liver. Intranasal mucous membrane of a nose absorb drug bypass gastric juice and liver. GnRH agonist calcitonin desmopressin ये इंट्रानाजल में आते हैं. GnRH. ओके. स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑक्यूजट. स्टेराइल preparation with solid or semi solid consistency whose size and shape is maintained for easy administration to the eye. Occlusat. Transport rate controlling membrane pilocarpine reservoir visible annual ring to aid handling and enclose reservoir. ठीक है जी. Sterile preparation with solid and semi solid consistency whose size and shape is maintained for easy administration to the eye. Progestastat. It is an intrauterine device. It is an intrauterine device. Okay. Which makes uterus unsuitable and cervix hostile to sperm. Progestastat. It is an intrauterine device which makes uterus unsuitable and cervix hostile to sperm. Liposomes. It is a small artificial vesicle spherical in shape having at least one lipid bilayer. Liposomes. It is a small artificial vesicle spherical in shape having at least one lipid bilayer. Bilayer. Bilayer of phospholipid. लिपोसोम्स हाइड्रोफोबिक लोड, लिपोसोम्स हाइड्रोफिलिक लोड. ओके ठीक है. monoclonal antibody. These are antibody designed to interact with a specific target protein. Monoclonal antibody. These are antibody designed to interact with a specific target protein. Insulin pump. It is a computerized device that deliver insulin in two ways. In a steady, measured and continuous dose. Steady पूरा स्थिर भाव मेजर होकर जीव एंड कंटिन्यूअस डोज दी प्रकार.
तो आज आम इंट्रोडक्शन फार्माकोलोजी सारी देले ठीक अच्छे। बर्तमान टाइम होगला के टाइम होगला 10टा जदि मुझे 100 क्वेश्चन करी 11टा हो ठीक अच्छे। आज ये करदे आज एटा ये था तापर आहरी काम अच्छी बाकी आज जीपैट पुणी टे माने ये करदवा 100 क्वेश्चन ये जीपैट ये फार्माकोलॉजी बहुत कम क्वेश्चन करी सिउटिक्स माने बहुत क्वेश्चन सारी दे सारे कम से कम गोटे थर तो माने माने सरी आने अधा कम से कम सारी दे बट कोलोजी रे अधा भी सरीनी कोलोजी रे मात्र 100-200 भीतर क्वेश्चन सरती ये केते कोलोजी रे पाखापाखि से मार्क्स टू मार्क्स 400 क्वेश्चन सारी तापरे ये सारी केतेटा 100 माने 500 क्वेश्चन पाखापाखि सारी आज आम देखा ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 111 ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रे 500 क्वेश्चन अछि 100 पढ़ले 5 दिन में सरियो चलो देखिए फार्माकोलॉजी टा को टिके थर अधिक वेटेज देवी फार्माकोलॉजी गोटे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 112 quaternary ammonium compound which is used to treatment myasthenia gravis quaternary ammonium compound which is used to treatment myasthenia gravis quaternary ammonium compound जो कि यूज होता है टू ट्रीटमेंट myasthenia gravis that is equal to 112 B neostigmine quaternary ammonium compound which is used to diagnosis of myasthenia gravis na edrophonium so quaternary ammonium compound which is used for the treatment used to treatment myasthenia gravis treatment है गले neostigmine है जिवो but diagnosis कले edrophonium है जिवो antidote for nicotine poisoning पाई antidote हो ची के neostigmine हवानी atropine nicotine poisoning और ट्राइमेथाफन 114 है डी
chronic long term therapy for myasthenia usually accomplished with chronic long term therapy of myasthenia usually accomplished with 115 ये गला बी नियोस्टिग्मिन chronic long term therapy of myasthenia usually accomplished with neostigmine function of M2 receptor in heart 116 A sinoatrial node hyperpolarization ठीक है जी sinoatrial node hyperpolarization neostigmine is mainly used in कहाँ पर यूज हो रहा है neostigmine 117 ये वाला बी दैट इज इक्वल टू myasthenia gravis neostigmine is mainly used in myasthenia gravis which cholinergic drug is a natural derivative which cholinergic drug এটা pilocarpine C which of the following drug is the shortest acting acetylcholinesterase inhibitor acetylcholinesterase inhibitor which of the following drug is the shortest acting acetylcholinesterase inhibitor I think B 119 एड्रोफोनियम all are seen with cholinergic muscarinic receptor stimulation except all are seen with cholinergic muscarinic receptor all are seen with cholinergic muscarinic receptor stimulation सब कुछ इसमें दिखेगा cholinergic muscarinic receptor stimulation में कौन यहाँ पर नहीं दिखेगा 120 ये गला हमारा बी राइज इन ब्लड प्रेशर मतलब कोलिनर्जिक मस्कारिनिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेशन होता है तब राइज इन ब्लड प्रेशर नहीं दिखता है स्वेटिंग दिखता है ब्राडिकार्डिया मतलब डिक्रीज्ड इन हार्ट रेट एंड उसके बाद आपका आ जाएगा यूरिनेशन आपका भी दिखेगा मेथाकोलिन स्लोज मैक्सिमम एगोनिस्ट एक्शन मेथाकोलिन shows maximum agonist action at 121 yes M2 receptor drug used in ameliorative test for myasthenia gravis is drug used in ameliorative test for myasthenia gravis is edrophonium 122 yes pilocarpine is a कौन pilocarpine 123 a muscarinic cholinergic drug pilocarpine is a muscarinic cholinergic drug 123 a pilocarpine in eye causes क्या करेगा 124 a that is equal to active meiosis करेगा ऑल आर कोलिनोमाइमेटिक अल्कालॉइड ये जितने भी होते हैं वो कोलिनोमाइमेटिक अल्कालॉइड एक्सेप्ट वन व्हिच इज कोलिनेस्टर सीई बी यस irreversible inhibitor of acetylcholinesterase का irreversible inhibitor कौन है acetylcholinesterase का irreversible inhibitor इकोथायोफेट सा देखिए इकोथायोफेट ऑर्गानोफॉस्फेट इनहिबिट कौन ऑर्गानोफॉस्फेट इनहिबिट करूची 127 ହେଲା ତମର ए
ऑर्गानोफॉस्फेट इनहिबिट करूची तमर ऑर्गानोफॉस्फेट इनहिबिट एसिटिल कोलिनस्ट्रेज ठीक अच्छे 127 है तमर ए एंटी कोलिनस्ट्रेज आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट एंटी कोलिनस्ट्रेज आर इनइफेक्टिव जो एंटी कोलिनस्ट्रेज होता है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा किसके विरुद्ध में 128 बी कार्बामेट पॉइजनिंग में तमरा एंटी कोलिनस्ट्रेज जो रहेगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा एंटी कोलिनस्ट्रेज are ineffective against carbamate poisoning. लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनस्ट्रेज कौन होता है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनस्ट्रेज एट्रोफोनियम आई थिंक 129 ना लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनस्ट्रेज 129 डी Ecothiophyte. Regarding neostigmine, all the following are correct. Regarding neostigmine, all the following are correct except होता है 130 है B. Shorter acting than edrophonium. Regarding neostigmine, all the following are correct except होची shorter acting than edrophonium. Edrophonium के अपेक्षा ये शटर एक्टिंग ठीक है जी जो कि गलत है एंटी कोलिनस्ट्रेज विथ सेंट्रल एक्शन एंटी कोलिनस्ट्रेज हो जाएगा बट सेंट्रल एक्शन 131 है तमरा बी दैट इज इक्वल टू साइसोस्टिग्मिन एंटी कोलिनस्ट्रेज बट जिसका सेंट्रल एक्शन रहता है साइसोस्टिग्मिन ठीक है जी नियोस्टिग्मिन एंटागोनाइज नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेड एंटागोनाइज कर देगा नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स एक्सेप्ट होची के 132 ये हला तमरा सी दैट इज इक्वल टू इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन एट द मोटर एंड प्लेट सो नियोस्टिग्मिन एंटागोनाइज नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक को ये क्या कर देगा एंटागोनाइज कर देगा सो डिक्रीजिंग ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोलिन एट द मोटर एंड प्लेट प्रिवेंटिंग K flux E flux from the cell depolarizing of the motor end plate all are true about neostigmine except नियोस्टिग्मिन के बारे में जितने भी तथ्य हैं सब सही है कौन गलत है 133 ए दैट इज इक्वल टू टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड 133 ए which of the following drug is used to reverse the effect of a D-tibocurarin which of the following drug is used इनमें से कौन सा ड्रग यूज होता है to reverse the effect of a D-tibocurarin D-tibocurarin का इफेक्ट को रिवर्स करने वाला 134 B नियोस्टिग्मिन भाई कौन 55 मिनिट हो गलानी